Stand by for the timer. T-minus 30 seconds now. नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है सभी दर्शकों का जो श्रीहरिकोटा के मिशन नियंत्रण कक्ष से इस मिशन के समीक्षा प्रस्तुत करूं और मेरे साथ हैं इंग्लिश कमेंटेटर मिस माधुरी पी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां चंद्रयान 3 मिशन की जिसने पूर्ण सफलता के साथ 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सफल लैंडिंग की और उसके बाद रोवर ने पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर विचरण कर भारत की अमिट छाप छोड़ दी है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सकुशल उतरने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। यह सब संभव हो पाया है इसरो के कुशल मार्गदर्शन और वैज्ञानिकों के प्रयास। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। चलो अब इसरो तेजो में सूर्य के अध्ययन के प्रयोजन से L-1 नामक अंतरिक्ष यान को आज 9 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के दिल्ली विमोचन में से भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 11:50 पर C-57 रॉकेट द्वारा प्रमोशन। आइए चलिए सूर्य की ओर और विज्ञान के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठाने और वैज्ञानिक तकनीक प्रदर्शन करें। तो बनी रहिए हमारे साथ आज के इस मिशन में जिसका नाम है C-57 आदित्य L-1 मिशन। Namaste viewers. The Indian Space Research Organization was heading for Srinagar with the sun. To take you along on the live telecast of this momentous event today, I am Madhavi, giving the commentary in what I'm David. Here is my commentator, Shriharikota, who will be giving the commentary in Hindi. We are about to script yet another chapter in the glorious space research history of India. Today, the workhorse rocket PSLV C-57 will carry Aditya L-1, the solar observatory of India, to be placed at a vantage point from where it will be able to continuously observe the sun and while being in the visibility of Earth-based ground stations. 10 days ago, India became the first country in the world to safely land a spacecraft in South Polar missions. I'm sure many of you were the eager and proud spectators of the Chandrayaan 3 landing that was being telecast from Isro, situated in Bangalore. We bring to you an integration film for the PSLV C-57 that took place in Satish Dhawan Space Center, Charge, Sriharikota. अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है प्रथम कोर चरण S-139 बूस्टर का नॉर्थ सेगमेंट। इस प्रथम चरण के साथ ये शुरुआत होती है और ये मिडिल सेगमेंट को इसके ऊपर संयोजित किया जा रहा है। इसे 3 मिडिल सेगमेंट और इसके ऊपर संयोजित किए जाएंगे और इसमें मिडिल सेगमेंट सबसे ऊपर की ओर संयोजित किया जाएगा और इस तरह तैयार होता है PSLV का चरण कोर बूस्टर S-139। इसमें 139 टन का प्रणोदक होता है और यह 9 टन है जो इसे प्रज्वलित करता है। इस मिशन पे यह PSLV C-57 एक्सेल मिशन। तो इसमें है 6 स्टेपॉन बूस्टर और एक में 12 टन के नोदक भरे जाते हैं। सब ठोस नोदक कहते हैं। यह SITDC-10 को आकर इसके साथ संयोजित किया जा रहा है। इंटर स्टेज आप देख रहे हैं इसमें रेट्रो मोड्स लगे हुए हैं प्रतिकन के लिए और यह है द्वितीय चरण जो कि तरल चरण है। इसमें विकास इंजन लगा हुआ है।
And here in the second stage of the PSLV rocket, prepared with subsystem preparation facility and brought to the vehicle assembly building of the second launch pad to be integrated on the first stage of the rocket. Here you can see the third stage PS3 and PS moving module inside the respective shore and then handled together to be moved to the vehicle assembly building. ये नज़ारा आप देख रहे हैं वेहिकल असेंबली बिल्डिंग का जहाँ पर पूरे वेहिकल को असेंबल किया जाता है। These are visuals from the clean room of the spacecraft preparation facility. This is the Aditya L-1 spacecraft being prepared and ensconced into a protective container where the environment is controlled and the temperature is controlled, the cleanliness is controlled. The vehicle is in the building again. There is a clean room provision to safely integrate it to the top rocket and then the heat shield halves are closed. Now the vehicle is fully ready to be moved to the launch pad, which is about 900 meters away. This is PSLV C-57, standing majestically. अभी अभी आपने देखा PSLV C-57 का इंटीग्रेशन वीडियो। ये पूरी तरह तैयार और चिंतन गतिविधियां जारी हैं, जांच जारी है प्रमोशन से पहले की। We are bringing this telecast to you live from the Mission Control Center, Satish Dhawan Space Center, Shah, Sriharikota. The launch will take place today, the 2nd of September 2023, at 11:50 hours in from the second launch pad. The PSLV 57 in its sixth and version will carry Aditya L-1 spacecraft having a mass of 1,480 kilograms. The mission intends to place the spacecraft in 235 by 19,500 kilometers orbit with an inclination of 19.5 degrees. The total mission duration will be 3,799 seconds or 63 minutes 19 seconds. Apart from the Darshan, you can watch the live telecast on Isro website, YouTube, Facebook, and Twitter. प्रमोशन से 22 मिनट की दूरी पर है। आदित्य L-1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष भारतीय मिशन है। इस मिशन से आदित्य L-1 नामक अंतरिक्षयान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली में लैंग्वेज 1 के चारों कोनों एक ब्रह्मंडल कक्षा में स्थापित किया जाए। यह लैंग्वेज 1 पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस तरह L-1 पर रखे गए उपग्रह को ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। यह अंतरिक्षयान विद्युत चुंबकीय और कण संबंधी क्षेत्रीय सूचकांकों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत, जिसे कोरोना के नाम से जानते हैं, इनका निरीक्षण करने के लिए इसने 7 निर्धार रखे हुए हैं। इनमें से 4 निर्धार सीधे सूर्य की गतिविधि का अध्ययन करेंगे तथा अन्य 3 निर्धार L-1 बिंदु पर बड़ी वर्षविधों का यथास्थिति अध्ययन। इस तरह आदित्य L-1 उपग्रह के निर्धार कोरोनल तापन, कोरोनल मास इंजेक्शन, फ्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान। अब आपके सामने प्रस्तुत है आदित्य L-1 कटिंग। PSLV C-57 is ready to launch the 1,480 kg Aditya L-1 spacecraft into Earth-bound orbit, from which it will be placed to a new orbit around the L-1 point in 4 months. The satellite is intended to study the sun and how it impacts the Eurosphere.
The Sun, which is the center of our solar system and has always fascinated aliens, is a ball of hot gases formed by the nuclear fusion process. The visible outer surface of the Sun is known as the photosphere, followed by the chromosphere and then the corona. After initial dropping through the chromosphere, the Sun's temperature abruptly rises in the corona, reaching extremely high values of 1 to 3 million Kelvin. The Aditya L-1 mission requires several scientific payloads to conduct a comprehensive study of the Sun. The Visible Emission Light Coronagraph, VELC, investigates the solar corona and the dynamics of coronal mass ejections. The Solar Ultraviolet Image Telescope, SOOT payload stands as sockets in deep ultraviolet light and detects fluctuations in solar irradiance. The artificial particle experiment aspects in plasma analyzer package for Aditya, Papa payloads investigate the wind and energy particles, as well as their energy distributors. The solar low energy X-ray spectrometer, SOLEXIS, and the high energy one orbiting X-ray spectrometer, HELIOS, analyze X-ray flares from the sun over a wide energy range. The magnetometer payload is designed to measure the interplanetary magnetic field at the L-1 point. Aditya L-1 is equipped to take in situ measurements of charged particles and fields at L-1 and is dedicated to studying the Sun across several energy bands. The Lagrange point L1 is located around 1.5 billion kilometers from the Earth between the Sun and the Earth. These observations are best made from a vantage point that provides a continuous view of the Sun. All payloads are designed in close coordination with Isro centers and national laboratories like as INA, IUCAA, and beyond. With this mission, ISRO will once again demonstrate its position in space exploration. We are 17 minutes 23 seconds from the launch time. Countdown for PSLV C-57 Aditya L-1 mission has been 24 hours long. It had started yesterday. During the countdown, critical activities have been carried out on the launch vehicle and the spacecraft. The propellant has been serviced into the launch vehicle stages. Bottles storing the gases of command and control operations have been charged to pre-launch pressure levels. The onboard batteries have been charged. Now, in a little while, we'll go to the automatic launch sequence initiation, which the preparations are underway. The, the launch and mission control centers. अभी अभी आपने सुना ग्रेजुएशन सूचना मिशन निदेशक को दिखते हैं संतोष होने पर Launch Organization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of new service 57 Aditya L-1 mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence. Satisfaction. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range, and directly hereby authorized. September 2023. All stations to note that has given authorization for the launch of USLV C-57 Aditya L-1 mission.
मैंने अभी देखा मिशन के मिशन डायरेक्टर श्री महेश जी ने हम इस मिशन का automatic launch sequence. The initiation has been announced, and hereafter a very critical capsule of performance validation for the launch vehicle systems will be carried out, and very close to the launch time, control will be passed on to the onboard computers. जी हाँ ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस चालू हो चुका है एएलएस शुरू होने के पश्चात एक स्वचालित होकर सर्वप्रथम टी माइनस 0.3 सेकंड्स पर आरसीटी का प्रचलन शुरू करेगा और T0 पर कोर बूस्टर S139 का प्रचलन शुरू होगा लेकिन इस दौरान स्वचालित तरीके से सभी जांच जारी रखे हुए हैं On meeting screens, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh. This mission is the 91st launch mission of history and 59th of workhorse PSL. As mentioned earlier, PSL is XL version with 6 strap-on motors alongside 4 S139 motor is being used for the present mission. This is the 25th time PSLV XL is getting ready for launch. So far in the year 2023, ISRO has launched SSLV's maiden successful mission, two commercial missions of PSLV, one mission of GSLV carrying the first among second generation of navigation satellites, one commercial mission of LVM-3, and another mission of LVM-3 again, carrying the prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. आदित्य L-1 की प्रक्षेपण है इस मिशन का इसको पृथ्वी से 233 बाई 19,500 किलोमीटर की एंडोबू कक्षा में 19.2 के झुकाव के साथ प्रक्षेपण किया जाएगा इस कक्षा में निर्धारित आर्क में 346.6 डिग्री को प्राप्त करने के लिए एसएलवी के चक्र चरण को 2 बार प्रज्वलित करने से प्राप्त किया जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ कोण जिसे फंक्शनल कोण के साथ मापा जाता है आदित्य L1 के इस दीर्घाकार कक्षा में प्रक्षेपण के पश्चात उचित समय पर और उचित अभिवृद्धि में अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष यान में लगे लिक्विड मोटर्स को फायर कर लक्षांतरित किया जाएगा और इस तरह पांचवी बार एलए मोटर को फायर कर यान को पृथ्वी के प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकलने में समुचित गति प्राप्त की जाएगी फिर वह पृथ्वी की कक्षा से छोड़कर सूर्य की कक्षा में प्रवेश करेगा और ऐसा करते हुए यह करीब 125 दिनों का समय लगेगा 125 दिनों बाद यह L1 पॉइंट के पास पहुंचकर और परिक्रमा करना शुरू कर और यही वो L1 पॉइंट है जहां पर से यह अपने वैज्ञानिक उद्देश्यों का प्रतिपादन कर अब हम उड़ान संख्या Let me, in the meantime, tell the viewers about the flight events that the launch of PSLV C-57 Aditya L-1 will take. This mission is among the longest flights of PSL. It is going to last for 63 minutes and 19 seconds. The liftoff coincides with the ignition of 4 S-139 solid rocket motor and the ignition of the 4 ground-lift straps. While the rocket is at 2.7 kilometers altitude, the 2 air-lift strap-ons also commence their operation. The action time of strap-on motors is 70 seconds. The ground-lift and the air-lift strap-ons are separated from the ongoing launch vehicle at 70 and 92 seconds into the flight, respectively.
Mode S139 continues to thrust till 110 seconds. The second serial PSLE operates on pressure-fed liquid engine. The optimal performance of the engine is ensured if the epic thrust cutoff or separation of the fuel stage is countered by additional means of thrust generation. Therefore, the Elite motors provided for this purpose ignite 3 seconds before the first stage separation and continue to thrust for 11 seconds. The second stage, PS2, commences its operation 200 milliseconds after the separation of first stage. By this time, the rocket would have attained 55 kilometers altitude. The closed loop guidance is initiated, which compares the present state to the intended injection point to compute an optimal trajectory. This happens while the rocket is at 59.7 kilometers altitude. At 204 seconds into the flight, payload fairing is separated. As the launch vehicle attains 113 kilometers altitude, the Earth's atmosphere is no longer present around. These events are taking place in the operational regime of the second stage, which lasts for 153 seconds. PS2 was separated 262.4 seconds into the flight at an altitude of 130 kilometers, while the relative velocity is 4.9 kilometers per second. The third stage, PS3, ignites about a second later and burns 418 seconds, during which time it adds 12 kilometers to the altitude and enhances relative velocity tremendously from 4.9 kilometers per second to 7.3 kilometers per second. There is a post phase of 200 seconds that follow PS3 burnout, during which there is no thrust being developed, but the rocket continues to be stable. At 581 seconds into the flight, the PS3 separates and lasts the whole stage of the rocket, together with the Aditya L-1 spacecraft, coasts for a long, long time thereafter. Till 1396 seconds into flight, the tracking station sets sharp port player to right and back will be acquiring the real-time performance data of the flight. But thereafter, there was no visibility to the rate of around 1600 seconds or 27 minutes. The fourth stage burns twice. First time for a duration of 30 seconds, second time for a duration of 472 seconds. The first burn takes place in no visibility zone. Second burn is tracked by a ship-owned terminal placed in Pacific Ocean. About 200 seconds after the completion of second burn of PS4, the injection conditions for the separation of Aditya L-1 are expected to be achieved. An altitude of 648.7 kilometers and a relative velocity of 8.9 kilometers per second, which translates into an orbit of 235 by 19,500 kilometers. The injection event of Aditya L-1 will be confirmed by tracking station and port. From the initial placement in low Earth orbit, Aditya L-1 will undergo a series of Earth-bound orbit raising and eventually it will exit Earth's sphere of influence to reach Lagrange's point L1 in a journey spanning over 4 months. There it will be placed in a halo orbit around L1. This is how India's first observatory class space-based solar mission will take shape. उड़ान से 6 मिनट की दूरी पर है ALS जारी है इसकी जांच सुचारू रूप से जारी है इस दौरान यहाँ उपस्थित आप देखिए यूएस गैलरी पे लॉन्च व्यू गैलरी पे उपस्थित जनरल एक रोमांच देखने की बनता है मौसम यहाँ लगभग 37 डिग्री का टेम्परेचर है वायु गति 0.8 पर सेकेंड इन सब के बावजूद यहाँ उपस्थित हुए हैं इस मंच को देखने के लिए
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। विभिन्न ऊंचाई पर वायु गति की गई है, कोई कंप्यूटर पर रोक नहीं है। The Satish Dhawan Space Center has its own meteorology department which keeps a very close watch on the weather in the launch phase. Weather today is going to be dry and hot. The skies will remain clear. Ground winds will be benign and upper winds also are benign for the flight PSLV C57 Aditya L-1 mission. We have 4 minutes, 23 seconds to the launch. सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़े देखते हुए सभी तंत्र सामान्य निष्पन्न। अब हम 4 मिनट की दूरी पर हैं उड़ान से। सामान्यतः पीएसएलवी के मिशन लगभग 2000 सेकंड में प्राप्त कर लिए जाते हैं, लेकिन यह मिशन कुछ है। इस मिशन में पीएसएलवी के चतुर्थचरण यानी PS4 को 2 बार में प्रचलित कर यह उद्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त की जाएगी। इसका मतलब PS4 को प्रचलित किया जाएगा, यह 30 सेकंड प्रचलित या बंद हो जाएगा। फिर करीब 1600 सेकंड की कोस्ट फेज जारी रहेगी। तत्पश्चात फिर PS4 को प्रचलित कर 432 सेकंड तक प्रणोदन किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। अब L-1 की कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा। इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकंड का समय लगेगा। ये PSLV सीक्वेंस की चंद्रयान ट्रैकिंग के संदर्भ में भी काफी जटिल है। इस ट्रैक करने के लिए शॉर्ट रोड रोने स्थित ग्राउंड स्टेशन में वास्तविक समय में यान की जानकारी आते रहेंगे। लेकिन चतुर्थ चरण की प्रज्वलन ये समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा। ये शिप ट्रैकिंग टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर स्थित किया गया है। वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद PS4 शटऑफ और आदित्य L-1 के अंतःक्षेपण की पुष्टि गुरु फ्रेंच के अंदाज में ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी। सीढ़ी 50 सेकंड की दूरी पर यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और PSLV एक्सेल संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इस वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कल ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स वाला मिशन है। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का एक PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष 30 का मिशन। -1 minute and -50 seconds हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर विमोचन किया जाएगा। -30 seconds, -25 seconds, -20 seconds, -15 seconds,
magnificently top of PSLV C57 with Aditya L-1 on board. PSLVC 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य की अखिल से बेजा प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और करीब है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV-C 57 सामान्य The rocket flying forward, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes are listed here with this side. Rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that it can do. And on this, the thrill are just amazing. Grounded and air strap-ons operating together with the first stage S-139. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड स्ट्रप-ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण में इसका सामान्य है। इस घटनाक्रम में एलिमेंट स्ट्रप-ऑन को यहाँ से पृथक किया जाएगा। इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रप-ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground and air strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. 10 सेकंड की प्रजनन काल के पश्चात सीधी पृथक कर दिया है। द्वितीय चरण की तरंग रोधक पर आधारित चरण में इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रज्वलन कर रहा है। Launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर हमारे चरण में इसमें विकास इंजन द्वारा 500 किलोन्यूटन का उत्पन्न होता है और इसका प्रजनन काल लगभग 50 सेकंड का होगा। Shriharikota players tracking stations presently requiring signals. Flight path closely matching the prediction. यहाँ क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यहाँ की ऊंचाई 106 किलोमीटर सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing covering the Aditya L-1 spacecraft has been separated. Current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण सजलाम से पृथक कर दिया जाता है। द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है इसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. तृतीय चरण में 7 नोदक का प्रयोग होता है।
और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलोमीटर का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यहाँ की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV से विश्वसनीय रॉकेट है इसरो का, वैसे ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन ये C-57 का। For the present mission, after PS3 completes its burn duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered by the development of thrust. क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी है। Command on for up. Unique to this mission, the PS4 will start twice. At predesignated times and duration. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the orbit of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Orbit of perigee is the angle that is made by the perigee point from the descending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L-1 with minimal propellant expenditure. वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का, जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं, वर्तमान में PS3 PS4 कंबाइंड कोस्टल फेज जारी है। यानी ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड। Stop. +9 Speaking a few words about the Aditya, described in the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Manirakasamandalesya Chakravarti Kechare Chakrasya Deepako Brahmanda Bhandasya Asayo Chakrati Bhagavati Jagadhi Sujaya. This mighty jewel, the light of the eastern sky, who generates, operates, and destroys, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of Earth. The explosive phenomena in sun and the solar flares are cause for concern to spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and Earth. Now we have a successful separation event of the third stage of PSLV.
जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक खत्म किया है और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है। इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है। यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुसरण करता हुआ चल रहा है। We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the Bias ground station. ये फेज लगभग 900 सेकंड का होगा। इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। लैंग्वेज फॉन्ट से जुड़ी कुछ रोचक भी हैं, जैसे कि इस फॉन्ट का नाम एक इटालियन फ्रेंच कंट्रोलर फ्लूइड लैंग्वेज के इस्तेमाल में लिखा गया। उन्होंने 1972 में से तकनीकी प्रपत्र जनरल थ्री बॉडी प्रॉब्लम में पढ़ी थी, लेकिन इससे पहले भी 3 L1 L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लेनार्ड आयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेशन सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज में स्थापित। L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1%। Vantage point for observing sun. The place in between the sun and direct visibility exists to the sun, while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near Earth space environment, which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on Sun are of extreme nature, which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the Sun up close. The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya L-1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point 1 or L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. Halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange point in the three-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya L1, as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya L1 will join spacecraft such as ESA NASA's Solar Hemispheric Observatory, SO, which has been at L1 since 1996. लैग्रांज पॉइंट एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज पहुंचती है तो वह वही बनी रहती है, क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अपकेंद्रीय बल जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रांजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और sun के बीच। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ऊर्जा की खपत पर या
उस स्थान पर अंतरिक्षयानों को अवतरण के लिए बनाए रखा जा सकता है। आदित्य L-1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्षयान को यहाँ तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। इस लैग्रेंजियन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं, जैसे हम यहाँ आदित्य L-1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ यह ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा। दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से इसे दूर से दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैंग्वेज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यही भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह की गतिविधि के नियंत्रण के लिए अधिक अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में PS4 चरण का कॉस्टिंग जारी है। यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है और यह उचित गति प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। Vehicle performance normal. The Aditya L-1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere, and which is the outermost layer of the sun. These payloads use electromagnetic, particle, and magnetic field detectors. First among the four remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph, EELC, which is a prime payload designed as a reflective coronagraph, the multi-slit spectrograph. This payload is developed jointly by the Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center, Isro Inertial Systems Unit, and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Ultraviolet Imaging Telescope SUIT, which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by ET University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URS, and IRS. The fourth payload is High Energy L-1 Orbiting X-ray Spectrometer or LEOS, developed by URS. Is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or otherwise called as ASPECS, which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory. This payload is plasma analyzer package for Aditya. In short, it is designed to understand solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Sarabhai Space Center. Seventh payload is a magnetometer or MAG developed by LEOS, which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. आर के बारे में जानते हुए इसमें सुदूर संवेदन निर्धार और यथास्थिति प्रेक्षण निर्धार हुए हैं। सुदूर संवेदन निर्धार में सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए EELC कोरोना प्रतिबिंब और वर्णतक मापन के लिए है।
सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो कि सैटेलाइट और ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर पर इंटीग्रेटेड यह पैरामेट्रिक प्रतिबिंब टेलीस्कोप इसी का अगला है सोलर सोलर लो एनर्जी एक्स स्पेक्ट्रोमीटर जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्णक्रम मापी है जो कि सूर्य के प्रेक्षण पे प्रयोग किया जाएगा इसमें एच पी L1 OX हाई एनर्जी L1 इमिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि हार्ड एक्सरे वर्णक्रम मापी है इसके विकल्पना सोलर फ्लेयर की होती है यथास्थिति निर्धारण में आगे सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट इसका उद्देश्य है सोलर सौर पावर में भारी आयंस प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यह भी सौर पावर में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण के लिए इसे एडवांस ट्रायंगल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र की यथास्थिति मापन किया है और ऐसे दो समुच्चय हुए हैं ज्ञान पूरी तरह सामान्य सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और यह अपने उद्देश्य के अनुसार आगे बढ़ रहा है आदित्य उनके नेटवर्क व अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ पीवीएससी इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है सोलिड हेलियोस दोनों ही यूआर सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा ASPS और PAP स्पेस फिजिक्स लैबोरेटरी BSS तिरुवनंतपुरम द्वारा और अपने एग्नेटोमीटर लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा किया गया है यह कोर्स बेस जारी रहने वाला है आइए इस तरह हम आपको ले चलते हैं इस विषय से जुड़ी चर्चा में जहाँ वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स As we are in the no visibility region of the flight path, we take you to the discussion room with the key personnel connected with the Aditya L-1 to enlighten more on the payloads and details. Over to discussion. Welcome viewers. After India's been history with the Chandrayaan 3 launch, there was no secret ice on this sun. These scientific breakthroughs back to back are like feathers on our country's hat. In fact, these celestial bodies are very important and are considered as sacred bodies in multiple global regions. The sun is the central body of our solar system. The world revolves around it. It is a source of energy for all planets, including the Earth. Today, I'm joined by all the scientists who have worked behind the scenes to make this project a grand success. And I'm Shri, reaching out to you from the Satish Space Center, Shriharikota. Today we'll be discussing about the impact and benefits of the Aditya L-1 space mission. So today we are joined by Dr. Anil Bharadwaj, Director of PRI, Dr. Professor Purvi Subramanian, Director of Indian Institute of Astrophysics, Dr. Sampath Subramanian, Principal Scientist of Aditya L-1 mission, Dr. Durgesh Tripati, PI of SCYT, Dr. Dipankar Banerjee, Director of IIS, Nanita, Dr. Satish Kandi, PI of PAPA, and Dr. Vipin K. Yadav, PI of Manager
Magnetic joining us today for a 25-minute fireside chat on the sidelines of Aditya L-1 launch. To start, Principal Scientist and PR of SONEX, Dr. Sengol Ias, why is Aditya L-1 mission so important and what are the objectives of the mission? Out of India for providing a great opportunity for the solar and wind community of India. Both solar data. More the data you have, we get more understanding about the system. And find our own start. So understanding them is much more important for our everyday life. So this mission was conceived initially with a support from Professor Singhara, along with Dr. Shrikumar and Professor Srivastava. We made sure that we will have a unique thing which is not available from any other missions even in so the second payload, what was consumed for this mission, will provide a new set of data which is currently not available from the which will provide us new insight into the solar and geophysics community, provides some important aspects like the initiation of internal mass ejections, the speed of which shape, and some wavebands which are very important for the Earth that near the infrared band, and the high energy particles, high energy radiations particles which are coming from the solar flares and cover mass ejections. So these are the information which will be updated from this information, which will allow us to understand the sun, planets, the atmosphere, which is an important link for the current day technology as well as the space weather. So much for your answer. So, Swaj, so the sun is a very important energy source of life. Having understood that, it creates trouble when it's angry. How does Aditya L1 help us with the mission? Thank you and good morning viewers. First of all, let me tell you that Aditya L-1 is a multi-wavelength, multi-instrument, multi-direction mission. Multi-wavelength because it works in X-rays, UV, and visible. Multi-instrument because there are several experiments on board, and multi-direction because it looks not only in the center but also around it. Now, when we the entry, there are two types of process response. One is solar flares, that means electromagnetic radiation, which reaches the in 8 minutes. But along with that, there is a mass which is also down. That can take about 2 to 4 days to start. What we are looking for from the Aditya mission is to see the impact of solar flares as well as mass stations as they come. We have instruments which look at not only western direction, but also in other directions. For example, perpendicular reflecting or in the up directions. The impact is that we need to see that the sun becomes quite blue. What are the ways in which thing that up and another point being at point L1, which is just 1%. It is able to provide us a lot of issues of the plasma and the electromagnetic radiation which is reaching them. So much, sir. So now we move to Dr. Annapurni Subramanian. So the science behind this mission is very unique. So what's the impact of this on the Earth, also the heliosphere? Yeah, so thank you for having me on this show. To put the thing in context, I was a director of the fashion and we have delivered one of the major payloads on this mission. This is the visible emission line code. So if you actually look at the works, I think you see the sun in the visible wavelength. Emission line. So what is detecting is the emission line of certain elements. Because the corona is hot, the emission you get is in the terms of it's not absorbing the light, but it's already hot, so it is coming down by emitting lights. So we are tracking this lights using what a coronagraph. What's a coronagraph? This instrument makes
a total solar eclipse all the time within the instrument. So you're looking at the sun all the time, 24/7, using this medium. This instrument looks at the sun as though it is always in total solar eclipse. Now, why do you want to find the eclipse all the time? Because you can see the corona. Why corona? Because when sun goes, when sun is angry, the corona is what it takes the magnetic wave. Now, what is unique in this instrument? This is going to see the corona as close as possible from the disk of the sun. What is so chatty about it? It's because the sun's corona is a million times fainter than the disk of the sun. So you have to not see the disk of the sun, but see only the corona. So this instrument is very difficult to make, challenging, but it is made. Now it's going to the orbit. What we plan to study using this instrument is the corona. It's done. Through this instrument, you can actually measure the velocity. This is called Doppler effect. So you can measure the velocity, you can measure how much matter is moving, eventually how much matter. So in overall, this instrument, along with the others, of course, the other media you might be explaining about it. So these four books typically will give you a lot of information regarding not only the sun, but also the moon. Thank you. It was very interesting, Doctor. Thank you very much. And now we'll move on to Durgesh Tripathi, Dr. Durgesh Tripathi. You are the PR for the for the payload suit. How is it different from other telescopes like Hubble or James Webb? And what are you investigating space? My voice is going to mumble because I'm still in the awe of the launch and what the payload is gone there. So